लोम्बार्ड खराब नतीजों के कारण अभी स्टॉक में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है, पर नतीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ भार्गव दास गुप्ता। भार्गव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ETNow स्वदेश पे समय देने के लिए और स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर हम नतीजे देखें तो इतना खास नहीं देखने को मिला है, पर आप कैसे देखते हैं चौथी तिमाही के नतीजे और फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर हम बात करें, और साथ ही कंपनी ने भारती के साथ एक मर्जर अनाउंस किया था, वो कैसा गया है, उससे आने वाले समय में क्या उम्मीदें लगाई जाए? तो ये साल हमारे लिए द फोकस वाज गेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द भारती एक्सा बिजनेस डन, और वो ये साल हमारा हो गया और वी आर वेरी हैप्पी विद द वे द प्रोसेस हैज वर्क। हमारा जो दो टीम है वो एक साथ आ गए हैं और बिजनेस इकट्ठा हो गया। और इफ यू सी द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस, ICICI Lombard post this integration has become the second largest insurer in the country. In terms of integration happened in September. Post-integration, most of the synergy benefits on the revenue side हमको मिल चुका है. Now we are focusing on the cost side and scaling up the business. Now on the scaling up of the business, अगर आप ये quarter देखें, this quarter has been a very good quarter for us in terms of top line growth. We've grown for the quarter in line with the market, but for the month of March, we are grown significantly higher than the market. Going ahead, हमको ये momentum लेके आगे बढ़ना है और at least we think that the growth will sustain even for the next year. जी, भार्गव सर, अभिषेक हियर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारती के साथ आपकी जो आपने मर्जर किया है, बहुत ही की मर्जर है, इससे सिनर्जी किस तरह से निकल के आएंगे और आपके लिए बेनिफिट्स क्या होंगे बड़े इससे? तो synergies largely in terms of administrative cost, branch rationalization जो कि हो चुका है, product rationalization, we are picking up जो उनका अच्छा प्रोडक्ट्स थे, लेकिन कोई सारे प्रोडक्ट्स लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स थे. हम what we are also now working on ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तो उधर आगे से once we do that there will be some savings there also. The other thing is productivity increase. दोनों टीम इकट्ठा हो गए और बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन we've not necessarily having to add more manpower, so that is helping us in terms of increasing manpower productivity. In terms of advertisement, there are savings. So there are savings on the cost side across board. On the claim side, we are seeing some efficiencies. वो efficiencies savings आएगी. But most of the savings that we are seeing, some of it has already come in the year gone by, in the last 5-6 months. Next year, we are expecting significant more, synergy benefits on the operating cost side. भार्गव जी, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी कई सारी चीज़ें कर रही है टेक्नोलॉजी में भी, बट ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है. उसके मुकाबले कंपनी ऐसा क्या खास कर रही है, और साथ ही क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस्तेमाल हो रहा है? Coming to the overall investment in technology, या एकदम सही है, हमारा फोकस रहा है टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के ऊपर. ये साल, apart from the two system integration of the Bharati AXA business and ICICI Lombard business, we have taken another big step. We have been the first insurance company that has moved all its core, first large insurance company which has moved all its core business, core applications to the cloud. So we are now completely on the cloud. इसमें आगे से we will have to now see how we can leverage the cloud. But cloud gives us scalability, flexibility, elasticity in terms of increasing business fast and managing cost, in that sense. But it also gives us opportunity to do more things on the digital ecosystem. और हमारा focus रहा है in terms of from the customer perspective, use technology to build convenience, both in sourcing, in service, in engagement, and in claims. So just a few examples. For example, motor claims now, 80% of the claims are done through our videos, app, through which you can, either the garage or customer themselves can do a survey with our support. We are using artificial intelligence to process health claims much faster. About 60% of the claims, the approval happens within about few minutes compared to few hours. Similarly, on the digital side, there is a huge investment that we are making on our mobile app, the I'll Take Care app, जिसमें आप टेली कंसल्टेशन, टेली हेल्थ, वीडियो कंसल्टेशन,
with a face scan, on the app, there is a face scan feature. With a face scan, you can get your oxygen saturation levels, your stress levels, your BP levels. So these are, areas that we are investing in, and we believe these are very, very convenient for our customers. भार्गव सर, एक और चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे। हमने देखा है कि जब सेकेंड वेव जब स्टेबलाइज हुई, उसके बाद से हेल्थ से जुड़ी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, चाहे फिर हेल्थ इंश्योरेंस का स्पेस हो, सब कुछ प्रेशर में रहा है। अब जबकि थर्ड वेव हम मान चुके हैं कि वो ख़त्म हो गई है, ऐसी बातें हो रही कि शायद एक फोर्थ वेव आएगी। ये बताइए कि आप किस तरह से ट्रेंड देख रहे हैं, आपका बिजनेस कैसा चला है और थर्ड वेव का इम्पैक्ट कैसा रहा है, और आगे के लिए आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं? देखिए, कोविड के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फॉर द ईयर गॉन बाय आई कैन टेल यू, इंडस्ट्री का तो करीब बताए 25,000 से 30,000 करोड़ का क्लेम आया है। फॉर अस, सिंस वी हैव अ स्मॉलर शेयर ऑफ हेल्थ, we have had a 550 crore plus hit on our P&L because of COVID. In the quarter gone by, that was about 27 crores. The only positive development in our opinion is that because of vaccination, because of more awareness, we don't see the risk in the same way that we saw in wave 2. So we are hopeful that agar wave 4, agar aaye, we all hope that it doesn't. The hospitalization levels are less. Other thing that we've seen is that for mild illness, you don't need to go to a hospital because we are providing health. We are providing home-based care. So on a cashless basis, if you inform us, we will provide through our network partners cashless home healthcare service, so that you don't have to go to a hospital. You can get treated for mild illness at home. Agar zarurat pare, if the ailment is severe, then of course we will take you to the hospital. So we are hopeful that the impact will not be as bad as the year gone by, but COVID के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। भार्गव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर हम जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो आप यहाँ पे दूसरे सबसे बड़े प्लेयर हैं भारत में, बट इसका इस बड़ी स्केल का आपको फ़ायदा किस तरीके से मिल रहा है और आगे चल के इसको और किस तरीके से लेवरेज करना चाहते हैं? Like any service business, particularly in financial services business and in a business like insurance, scale has a tremendous advantage, both in terms of investment that you can do for technology. I was talking about the technology investment, in terms of the data that you have and the analytics and the artificial intelligence that you can, models that you can build, in terms of the cost advantage of scale. And these are the reasons that, if you have a large, efficient company, just by being large doesn't help. You have to leverage the advantage of being large and build better services and better products for customers using all of these capabilities that I talked about. If you do that, market share will definitely shift to the better large players. And that, as a trend, we believe will happen for the next 5-10 years. भार्गव सर, बहुत शुक्रिया आपको आज समय देने के लिए, नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। आपको